Good morning everyone and welcome to my YouTube channel blissbiker, and today date is 24th of November and time is 4:15 in the morning, and I am ready with my one more solo ride to Goa, that is Bangalore to Goa. Recently I did Bangalore, Hampi, Hyderabad, Bangalore solo ride. Link is here. And also, if you are new to my channel, please subscribe to my channel. I will be putting lovely travel videos on this channel every week. So see you guys on my place. It's 4:45 in the morning and जिस प्लेस पे मैं रुकने वाला हूँ वो यहाँ से 663 दिखा रहा है, and according to the Google map I will be reaching there by 3 PM in the evening. अभी मैं तुमको रोड्स के थ्रू जाऊँगा. You guys have already seen the same road, same nicing road in my other blogs like Gokarna blog, and then my solo ride to Bangalore, Hampi, Hyderabad, Bangalore. Hello everyone, so time is 6:15 in the morning, so I have done around 123 kilometers. So guys, अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था यहाँ पर सनराइज़ देखने के लिए, क्योंकि हाईवे से सनराइज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था. और काफ़ी सारे बाइकर्स जा रहे हैं गोवा के लिए. आई मेट फ्यू ऑफ देम. इट्स रियली नाइस. मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं सोलो राइड कर रहा हूँ. तो यू गाइस एंजॉय द रोड एंड आई विल प्ले सम म्यूजिक टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ दिस रोड. लेट्स प्ले. Hello friends, so time is 9:30 AM in the morning, and I have done around 400 kilometers from the Bangalore, and I think Goa is 250 kilometer more to go. And अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हूँ हाईवे के आसपास कहीं. आई डोंट नो ये प्लेस कौन सा है, बट दिस इज़ वन राजस्थानी ढाबा. सुबह धूप नहीं थी एंड थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बाइक चलाने में. लेकिन अब धीरे धीरे धूप बढ़ती जा रही है, तो इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट टू राइड इन दिस वेदर, बट या लेट्स सी. एंड हियर इज़ अ बाइक एंड हियर इज़ द रेस्टोरेंट और ढाबा. So I will get back to you guys after eating something. Till that time, you just enjoy the time lapse. So time is 10:20 in the morning, and this is a restaurant, Rajasthan Dhaba. So there are 4 more riders. I think they are going to IBW, not sure. अबे खुल जाओ. So this place is Hubli, and अभी मैं यहाँ पर KTM सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिल रहा है एक्चुअली, और ये शीशा भी लूज है. So if you see here, this thing is broken. ये यहाँ पे जो बोल्ट के लिए इसमें एक रबड़ रहती है जिससे बोल्ट टाइट रहता है, तो वो निकल चुका है दोनों साइड से. सो इट्स वाइब्रेटिंग और ये भी लूज है. थैंक यू भैया. थैंक्स. नाम आपका? साबिन. थैंक्स. सो थैंक्स टू साबिन. अभी देखो एकदम टाइट हो गया है. ये भी क्लच प्लेट भी काफ़ी टाइट था, ये भी लूज़ कर दिया है. एंड देन दिस इज़ ऑल्सो फाइन. सो अभी यहाँ पर एक वेल्डिंग शॉप भी है. सो मेरा जो साइलेंसर का प्लेट है बाइक का, वो लूज़ है, जिसके कारण वाइब्रेशन आते हैं. सो आई एम प्लानिंग टू फिक्स दैट वन एज वेल. गोवा जाने के लिए यही सेम रूट है, एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वन. एंड यहाँ से जो गोवा है वो 200 किलोमीटर है हुबली से. एक्चुअली यहाँ से 3 रास्ते हैं गोवा जाने के. सो शॉर्टेस्ट वन इज़ दिस वन, जिससे मैं जा रहा हूँ, गोइंग फ्रॉम हुबली टू रामनगर एंड फ्रॉम रामनगर टू गोवा. So I think this is the shortest route to take while going to Goa from the Hubli.
हुबली से रामनगर जो वो 31 किलोमीटर है. So and this is a straight highway. So time is 5 p.m. in the evening, and I reached my guest house in Goa around 4:45 p.m. in the evening, and just take a quick shower because I started at 5 a.m. in the morning, and it's like 11 hours of journey. So after taking the shower, I feel refreshed. Okay, so the main thing is IBW event has already started at 4 p.m. in the evening, and currently 5 p.m. in the evening. So I am 1 hour late. So what I will do, I will quickly wrap up my all the things and see you guys on the way towards IBW event. That guy has done first from that one and the second tire from this one. For entering your bike into the main arena, you have to take one band, and for that you need to pay the entry fees, I guess. I paid it, so I am going there and at the registration desk and take the band, and I want to go with my bike on the main arena and see. I will show you guys as well. I am pretty excited now. Sushil, if you don't remember, I called you for going together, and then you told me that you didn't have the plan yet. Oh, okay, for this IBW. Yeah. I think you forgot that.
हेलो फ्रेंड्स, सो द करंटली टाइम इज़ 9:40 इन द मॉर्निंग एंड कल शाम को IBW से आने के बाद मैं जल्दी सो गया था, जिसके कारण मैं अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाया. सो आई एम एंडिंग माई ब्लॉग हेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो if you really like this video, and subscribe to my channel for more such videos. Having said that, have a great day ahead, guys.